Okay, challenge. इसको past papers को Scavengly page पे रखते हैं. So let me quickly insert the file. Um, A2 topical natural selection speciation. अच्छा जी. चलिए, बहुत ज़्यादा questions नहीं हैं, 2 questions हैं, लेकिन since they deal with, by the way, one of these question is something that we, इसका A part हम देख चुके हैं already, लेकिन इसका B part है, so let's look at this together. I'm reading the question, please pay attention again. This is May, June 2018, variant 4.2 और part जो है जी 4B है, ठीक है. Adult Drosophila fruit flies feed on yeasts on the surface of ripe fruits. अच्छा जी, आपको याद है ये हमने किया था, ये मैंने राबिया आपके साथ किया था कि नहीं किया था हमने पिछली दफा? आपके साथ मैंने किया, किसी और के साथ किया, मुझे कंफ्यूजन होती है. But whatever the case is, adult Drosophila fruit flies feed on yeast on the surface of ripe fruits. ठीक है जी, ripe fruit है जी, for example apple है, एप्पल के ऊपर यीस्ट लगी हुई है फॉर एग्जांपल, और यीस्ट के ऊपर बेसिकली ये मक्खी जो है ये फ्लाई करके आके बैठती है फॉर एग्जांपल. दैट्स हाउ इट इज, दैट्स द एडल्ट ड्रोसोफिला. Female flies lay their eggs inside the fruit and the larvae feed inside the fruit before developing into adults. Okay, I think we saw this question the other day. Yes, we did. नहीं, लेकिन इसका हमने ए पार्ट किया, आप देखें. अब मैंने जो आपके लिए वहां पर रेडी किया है उसका बी पार्ट है. सो लेट्स गो थ्रू द क्वेश्चन अगेन. Adult Drosophila fruit flies feed on yeast on the surface of ripe fruits. Female flies lay their eggs inside the fruit and the larvae feed inside the fruit, developing into adults. ठीक है जी, समझ में आ गई. The tree blah blah produces fruits called noni fruits. Noni fruits contain a toxin and are avoided by nearly all Drosophilas, including. तो हमने देखा था कि ये noni fruits ने basically evolve किया है, and they have started producing a toxin which basically drives all of these Drosophilas away, including this particular Drosophila in mainland Africa. One population of D. jacoba lives on island of the coast of Africa. The population of this has specialized to feed on noni fruit. ठीक है जी. अब ये एक जो है स्पीशी, इसने इवॉल्व किया है to feed on the noni fruit. Flies of this population produce enzymes that give resistance to the toxin in noni fruits. Adults are able to feed on yeast on the fruit surface, and their eggs and larvae can develop and grow inside the fruits. Scientists have used bioinformatics to estimate the unique D population on Meoti originated in the last 30,000 years. अब question देखें क्या है. Explain why living on an island increases the likelihood. अब देखें, आइलैंड पे रहने की वजह से likelihood is increasing of non-toxin resistant population becoming a separate species to the mainland population. यानी कि एक पॉपुलेशन है मेनलैंड पे और एक है आइलैंड पे. ठीक है जी. सो इट इज फॉर 3 marks. तो अब ये देखें बेसिकली हो क्या रहा है. आप देख रहे हैं कि दिस इज ऑफ कोर्स नेचुरल सिलेक्शन, और नेचुरल सिलेक्शन में भी ये कौन सी स्पीसिएशन है विच इज बीइंग सेपरेटेड बाय बैरियर्स. ये देखें, लुक एट द मार्क स्कीम. दिस इज सेपरेटेड बाय अ ज्योग्राफिकल बैरियर, या आप उसकी डिस्क्रिप्शन दे दें कि वो एक मेनलैंड है और एक आइलैंड है, और डिफरेंट एनवायरमेंट्स हैं, तो ऑफ कोर्स देयर विल बी डिफरेंट एनवायरमेंटल कंडीशंस स्लैश सिलेक्शन प्रेशर्स. आई वुड रादर गो फॉर दिस वर्ड, उसने एक्सेप्टेबल रखा हुआ है, लेकिन बहरहाल which will lead to, again, अब यहाँ पे उसने देखे क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया हुआ, लेकिन the examiner is expecting that, excuse me,
is expecting that you know what is allopatric speciation. So this results in allopatric speciation, which is a speciation that results from geographical barrier. ठीक है, अच्छा जी. उसके बाद reproductive isolation, of course, species अब अलग हो गए तो they will show what is known as reproductive isolation, which means no breeding with mainland flies, no gene flow. ठीक है, और इसको अगर आप कैटेगोरिकली हिसाब से देखें तो ये प्री जाइगोटिक है, यानी कि जाइगोट बन ही नहीं रहा इन द फर्स्ट प्लेस. New allele not lost, diluted in the frequency. Okay, now these are two terms. I'm sorry, I forgot to mention them. Genetic drift or founder's effect. इनको मैं आपके लिए define कर देता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ. The idea is very simple. देखिए, genetic drift, इसको मैं यहीं पे लिख रहा हूँ बच्चों, आप इसको अगर यहीं पे नोट कर लें बहुत अच्छी बात होगी. Drift, राबिया आपको ड्रिफ्टिंग आती? If that's not too personal to ask. No, sir. आप पता तो है ना ड्रिफ्टिंग किसको कहते हैं? Yes. ओके, तो ड्रिफ्ट का मतलब होता है नॉर्मल तरीके से आप चला रहे हैं तो आपका दिमाग भी घूम गया तो फिर आपके पहिए भी ड्रिफ्ट करना शुरू हो जाते हैं साथ. सो जेनेटिक ड्रिफ्ट इज एक्चुअली something on similar lines. It's a process of random change in frequencies of alleles. Process of random. वैसे टायर खराब हो जाते हैं, ड्रिफ्टिंग बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए. Okay, when I talked about this idea just in front of my father, just talked about him back when I was in my college days, I never drifted. Okay, so don't assume. तो मेरे अब्बू कहते टायर खराब हो जाएंगे, खबरदार जो इसका सोचा भी. Anyhow, so process of random change in frequencies of alleles in a population. और ये एकदम मुंह उठा के क्यों एलील चेंज हो जाती हैं? कोई भी हार्श एनवायरमेंटल कंडीशन की वजह से हो सकती है, कैन बी म्यूटेशन, एनीथिंग कैन बी पॉसिबल. ओके, अच्छा, नाउ a genetic drift will lead to an effect basically which is founder's effect. Okay, मैं आपको founder's effect की भी definition ऊपर दे देता हूँ, फिर मैं आपको explain करता हूँ. ये लिख लें जरा, founder's effect. Now, founder's effect is a special case of genetic drift. Special case of genetic drift that occurs when a new small population, new comma small, और ये small population इसकी condition है. Population small होगी तो genetic drift होगा. A special case of genetic drift that occurs when a new small population is established. और ये established किसी भी चीज की वजह से हो सकती है. फॉर एग्जांपल, एक मेनलैंड था और उस मेनलैंड में जो है ना वो क्रैक आ गया, या कोई लेक बन गई फॉर एग्जांपल, और ये छोटी पॉपुलेशन हो गई और ये लार्ज पॉपुलेशन हो गई. मैंने आपको बताया फिजिकल बैरियर कोई भी हो सकता है, लेक हो सकती है, पहाड़ हो सकता है, एनीथिंग लिटरली, इवन अ रोड. एक रोड भी बीच में मेन रोड बन जाए तो दैट कैन आल्सो बी कंसिडर्ड एज. सो a special case of genetic drift that occurs when a new small population is established. The new population may by chance be genetically different. This new population may by chance, यानी कि फॉर एग्जाम्पल इस स्मॉल वाली पॉपुलेशन की किसी एक ऑर्गेनिज्म के जीन में स्पॉन्टेनियस चेंज आ गया. ठीक है, सो दिस न्यू पॉपुलेशन में बाय चांस बी जेनेटिकली डिफरेंट, may be genetically different from parent population. ठीक है, क्योंकि वहां पे पहले देखें, पहले नंबर 1 बैरियर आ गया, नंबर 2 स्मॉल पॉपुलेशन में कोई चेंज आ गया, तो ऑफ कोर्स नाउ द स्मॉल पॉपुलेशन इज गोइंग टू बी डिफरेंट फ्रॉम द पेरेंट पॉपुलेशन. ठीक है, और वो मजीद दे कैन इंक्रीज. सो अगेन दीज आर टू रिलेटेड आइडियाज. ओके,
So again, allopatric speciation will result in founder's effect in genetic variation, और ये ज़्यादा prominent होता है in smaller populations. Now I want to read what the examiner has to say. Most candidates explained that geographical barrier was responsible for separating the two populations, which were subjected to different selection pressures. Very important. Or environmental conditions resulting in speciation. देखिए, different environmental conditions are selection pressures. Okay. ये marking scheme और examiner report में वो generous हुआ है, बाद में वो रगड़ा लगाता है. You have to use the word selection pressure, resulting in allopatric speciation. Genetic drift was the only effect resulting from the formation of new alleles that was occasionally given in the answers. Okay, so make sure that you mention this when you are talking about क्या कहते हैं allopatric speciation. ठीक है, और ये एक और क्वेश्चन है मई जून 12 का, ये बात कर रहा है सिम्पैट्रिक की. ठीक है, नहीं सिम्पैट्रिक की नहीं कर रहा, allopatric की कर रहा है मेरे ख्याल से. ये भी allopatric की. I couldn't find a question on sympatric. तो ये इस पीडीएफ को मैं अभी सेव करूं, इसको भी करूं. ये बेसिकली एक क्वेश्चन है जो कि मैं आपको भेज रहा हूं और मैं चाह रहा हूं कि ये आप खुद कर लें एक दफा. Of course, making you do the questions is also something very important. So there are two things that I want you to do today, ideally speaking, before our next class tomorrow. ये अभी तक जितना कुछ मैंने आपको पढ़ाया है, which dealing with the natural selection, speciation, sympatric, allopatric, इसकी thorough reading आप करिए. मैं आपको किसी टॉपिक के लिए नहीं कहता, but this is important for this topic. And number two, I'm just giving you one question. I want you to try this yourself. ये मैं आपको भेज दूंगा, इसके नीचे इसकी की वगैरह भी दी हुई है, की भी दी हुई है और एग्जामिनर रिपोर्ट भी दी हुई है. I want you to, before, not just read out the answers, try and do it first and then reconcile this answer with your answer. ठीक है जी. मैंने सोचा था आज आर्टिफिशियल सिलेक्शन हो जाएगी, लेकिन आई थिंक सिंस दैट्स अ वेरी बिग टॉपिक, नॉट अ वेरी बिग टॉपिक, इंशाल्लाह इस टॉपिक को हम बाइंड अप कर देंगे वेडनेसडे तक. Any questions we have for today? If we don't have any questions, चलें जी, यहाँ पे आज रोकते हैं फिर इंशाल्लाह. आज मैं आपको 5 मिनट जल्दी छोड़ रहा हूँ. इंशाल्लाह see you tomorrow same time. राबिया, thank you. अपना बहुत ख्याल रखिए.